Moon's lit, candles and fire in your eyes. We all lay celeb. As I lay by your side, I know I want you. I just don't know why. The only way I can survive. Coffee every morning, whiskey every night. Blow the candles out and think about my life. Welcome back to your favorite YouTube channel R International, and today in this session we're going to discuss about the most important part of your speaking section, that is speaking section task 2, the cue card. And the topic of today, the most important topic that are being repeated most of the time, and the topic is describe a time when you lost in something which is important and valuable for you. Okay. आज यहाँ डिस्कस करेंगे जो क्यू कार्ड है जो मोस्टली रिपीटेड हो रहा है, बहुत सारे जो मेरे बच्चे हैं उन लोगों ने द स्टूडेंट्स ऑफ माई सेल्फ हु हैव बीन अपीयरिंग इन द टेस्ट एंड हु हैड ऑलरेडी अपीयर इन द टेस्ट, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि कई बार ये जो क्यू कार्ड है रिपीटेड हुआ है. सो डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू लॉस्ट एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल आइटम और वैल्यूएबल थिंग और ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये जो क्यू कार्ड है वो उसके बुलेट टॉपिक्स क्या है. लेट्स डिस्कस अबाउट द बुलेट टॉपिक्स फर्स्ट. तो पहला है व्हेन एंड वेयर इट हैपन, मींस के वो कहाँ और कैसे, व्हेन एंड वेयर. तो आप जब स्टोरी शुरू करते हो, जब आपको एग्जामिनर ये जो टॉपिक देता है, क्यू कार्ड दे रहे आपको, सो आपको पहले क्या करना है. पहले तो ये जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, आई वुड से क्वेश्चन आप आराम से पढ़िए, टेक योर टाइम, क्योंकि आपको प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, जस्ट 1 मिनट फॉर द प्रिपरेशन. तो मेजोरिटी बच्चे आई वुड से आप एक गलती मत करना, जो सबके मैंने सबको बोला है, पर आप भी खास ध्यान रखें कि जब भी आपको टॉपिक मिले, डू नॉट स्टार्ट राइटिंग द होल सेंटेंसेस, क्योंकि आपके पास हार्डली यू विल हैव 40 to 50 सेकंड टू राइट. सो आई वुड एडवाइज रादर देन राइटिंग अ फुल सेंटेंस, यू शुड कीप और यू शुड मेक अ नोट्स ओनली. जो नोट्स क्या बनानी है, तो आपके जो बुलेट टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग आप नोट बनाए. तो पहला जो बुलेट टॉपिक है दैट इज व्हेन एंड वेयर इट हैपेंस. सो व्हेन मींस कि आप कुछ टाइम दिखा दीजिए कि इट वाज ए, पहले तो आप ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए कि क्या है जो आपने लॉस किया है, विच वन दैट यू लॉस्ट दैट वुड बी वैल्यूएबल टू यू. तो आप जो ऑब्जेक्ट है ले सकते हैं, चाहे योर रिस्ट वॉच, the important value of a wristwatch, that is an expensive wristwatch and you received it as a gift from your father or your from mother or parents on your last birthday. तो आपको ये ले. और the most important most common topic I would say the object is a mobile phone. आप उसके बारे में ज्यादा बोल सकते हो when you talk about a mobile, क्योंकि यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखें, जो भी आप स्टोरी और आइडिया जो प्रीफर करोगे, जो सिलेक्ट करोगे, उसको आपको उसके रिलेटेड यू शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ आइडिया, द वर्ड, द लाइन, द वोकैबुलरी, द डिस्क्रिप्शन दैट यू शुड हैव इन डेप्थ. बिकॉज आप जो क्यू कार्ड का रिस्पॉन्स दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपके फॉलोअप क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं. सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन टुडे. सो व्हेन एंड वेयर इट हैपेंस. सो व्हेन एंड वेयर कहाँ हुआ. सो आपको एक लोकेशन डिसाइड कर लीजिए, टाइम डिसाइड कर लीजिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल इट वाज अ वैकेशन और हॉलीडे और वीकेंड, इट वाज अ संडे. आई आपको आप जब शुरू कर रहे हो क्यू कार्ड, तो पहले क्या है कि स्ट्रेट अवे ऐसे वैसे जंप नहीं करना है आपको. क्या स्ट्रेट अवे पहले एक फॉर्मेलिटी दे देनी है, दैट वी आई लॉस्ट समथिंग. तो आप अपने बारे में पहले एक सेंटेंस डिस्क्राइब कर दीजिए. Basically, I'm not a forgetful person. I'm a careful person, and I look after each and every of my personal belonging. But बस आपने यहाँ अपना हो गया. फिर आप एक कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन दिखाइए, however लिंकर डाल के. आपने पहले ये बोल दिया कि I am not a forgetful person and I'm a much careful person and always look after my personal belongings such as my wallet, my mobile phone, my bike keys, my books or even my study material and each and everything.
I take lot and lot much care. However, फिर यहाँ से आप कॉन्ट्राडिक्ट कर दीजिए और सीधा टॉपिक पे जंप करना है. लाइक प्री स्टोरी जो है आप थोड़ी रखिए और सीधे टॉपिक पे आ जाइए. ये जो टॉपिक है उसके ऊपर आगे आप लाइक हाउ एवर करके सेंटेंस को आप कनेक्ट कीजिए कि हाउ एवर हियर इन दिस ओकेशन I would like to inform you that during my last summer holiday और लास्ट वीकेंड और ड्यूरिंग लास्ट मार्च, आप कोई भी टाइम इंडिकेट कर दीजिए क्योंकि पहला बुलेट टॉपिक है व्हेन. सो ड्यूरिंग माय लास्ट हॉलीडे I've been to a picnic spot which is located quite far away from my house or from my society, from my city, or which is located about 180 kilometers away from my city. So when हो गया time, so it was during the incident took place during the time of my last holiday, and it happens the mobile phone which I lost it during my visit to a zoo. हम कहाँ गए थे तो like it can be a park, it can be a zoo, it can be like been to a party, or it can be I've been to some favorite picnic spots or like tourist destination, hill station. आप कोई भी एक लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, आपको सिर्फ एक बार ही बोलना है. ओके, तो ये बुलेट टॉपिक हो गया. जब आपने पहला डिस्क्राइब किया तो ये आइडिया हो गया. सेकंड बुलेट इज व्हाट इट वाज, क्या था. सो इट वाज नन अदर देन माय मोबाइल फोन, या फिर आप बोल सकते हो रिस्ट वॉच. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने रिस्ट वॉच ले लिया. सो इट वाज नन अदर देन माय एक्सपेंसिव एंड माय lovely wristwatch. The wristwatch which I received as a gift from my parent, and it was my 19th birthday. आप एक कब मिली वो भी दिखा दीजिए क्योंकि short idea will not give you a good grade. You will have to describe each and every idea. We do not we are not looking, or the examiner is not looking at much more ideas. What the examiner is looking, each and every well prepared, well organized, and well addressed idea. So like here in this occasion, I'm going to discuss about a wristwatch which I lost during my last summer holiday when I've been to a tourist spot or when I've been to a garden or park with my college friends. The wristwatch which was made of HMT, or like company का नाम दे दीजिए. The wristwatch which was made of HMT or Titan, which was made of Titan, and it was the most precious gift from my parent during my 19th birthday. So what it was वो हो गया. Next would be how important and valuable it was to you. तो आपके लिए वो important क्यों थी? Because it was not only attractive or expensive, but it was most important for me due to its psychological, or it due to its kind of like a personal reason. आप यहाँ बोल सकते हो emotional attachment, because it is a lovely gift, or because it was the most precious and lovely gift from my parent. So importance, the value of the product is described, and how you lost it. अब आपने कैसे खो दिया. तो रिस्ट वॉच है, आपने कैसे खोई होगी. लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लाइक आई बीन टू पार्क एंड व्हाइल हैविंग अ लंच आई टुक इट ऑफ to wash my hand and my face, because it is a kind of tradition in India, and it is medically proven that before we having any food we should maintain the hygiene level, and for that reason, to remove bacteria and everything from my hand, I removed my watch and I kept somewhere while having my lunch and enjoying with my friend, and we were discussing a lot of, and we were cracking jokes and enjoying the time over there. But suddenly after once we finished, I forget to pick it back where I kept it. मैंने जहाँ रखी थी, I forget to took it back. But after an hour, I remembered that there was no watch in my hand, and suddenly it reminded me that I kept there. So I retracked my वे बैक, मीन्स के जहां जहां से मैं गुजरा. रिट्रैक मीन्स के जहां गए और वहां से वापस आना. RETRACT, रिट्रैक मीन्स के वापस आना. तो आई रिट्रैक माई वे बैक, बट आई कुडंट फाइंड इट, मुझे मिली नहीं. सो इम्पोर्टेंस हो गया, क्या था वो था. और लाइक लास्ट इज लाइक एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट योर एक्सपीरियंस. तो बोल देना है कि आई वाज फीलिंग सो एक्सट्रीमली लाइक सैड बिकॉज इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम माय पेरेंट एंड सो एंड सो. सो इसकी जगह लेट्स चेंज द ऑब्जेक्ट. rather than wristwatch, let's say for example the mobile phone. Okay, so mobile phone है तो that would have like a lot of idea you will have. सेम आइडिया रहेगी आपको. जो बुलेट टॉपिक्स है that would remain the same, like it was a holiday and I've been with my friends, and
अब जो शुरू किया था हमने कि कहाँ क्या, सो आई आप शुरुआत से शुरू करें अगेन। मोबाइल फोन पे कैसे आप आ सकते हो? सो throughout my entire life, I have been a most careful person in my family, and I have always looked after my each and every personal belongings, such as my wristwatch, my mobile phone, my wallet, my keys, and each and everything related to my study material. Even I always take care of about my laptop, my hard drive, portable hard drive, as well as my pen drive, because those things are most important and crucial for my progression in academic journey. However, फिर यहाँ से आप कॉन्ट्रास्ट कीजिए। However, I would like to describe or I would like to inform you, एग्जामिनर को आप थोड़ा बहुत एड्रेस भी कर सकते हो। So I would like to inform you that during one incident when I've been to a holiday to visit a park with my friend during last summer holiday, I lost my mobile phone. Okay, so when and where और वो ऑब्जेक्ट किया था वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी आपको ये बोलना है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द मोबाइल फोन। सो द मोबाइल फोन आई हैव कलेक्टेड लॉट ऑफ मनी एंड आई सेव्ड इट फ्रॉम आई सेव्ड माय मनी, पॉकेट मनी, एज वेल एज फ्रॉम माय सैलरी। अगर आप काम कर रहे हो तो फ्रॉम माय सैलरी, और अगर आप स्टूडेंट हो तो फ्रॉम माय पॉकेट मनी, एंड received a financial support from mother as well as from father, and I purchased an expensive iPhone 14 Pro Max। एक एक्सपेंसिव मोबाइल का नाम दे दीजिए, चाहे हो या ना हो, यहाँ पे बोलना है हमें। ओके, so I purchased iPhone 14 Pro Max, and it was the one of the most expensive gadget I had purchased throughout my entire life. So like you should describe your phone, why it was important to you. Like पहले आपने बोल दिया कि the phone is important so in me, and it was like select the iPhone 15 Pro Max or 14 Pro Max, आपने जो भी मॉडल बोल दिया, then you should go for like you have to describe about the most important part or the value of the phone towards you, why it was important to you. The phone was not only expensive, यहाँ आप complex sentence डाल सकते हैं कि the phone was not only expensive but it had tons and tons of, so it had tons of photos and memories of my family, my friends, and whenever I visited outside, like to the Dumas beach, visiting to the temple, and many more. Additionally, the phone contained the most important my scanned document, academic document, my personal identification, and even like I'm a student of a computer application, like a computer. I'm as of now pursuing my computer engineering, or आप यहाँ बोल सकते हो अगर professional working हो. So like I'm working as a like a computer engineer, and because of that, I store a lot of my projects, my assignments, and important work related schedule on my phone. And due to that reason I will have to face lot of consequences, or I will have to face lot of issues. So क्या कि मुझे face करनी पड़ेगी तक कहाँ से, like I would have to face or I will have to face, so that would give a like a kind of a future tense thing, like हमारा जो kind of presentation है उसे PPF structure में ले जाना है, past present and future, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत future भी हो गया। तो अभी यहाँ आप देखिए आपने कैसे how you lost the phone or how did you lose the phone. Okay, so आप बोल सकते हैं कि while we were enjoying, and suddenly one of my friend approached us, all of us, like we were 7 friends on a tour, and one of my friend approached us to play a volleyball on a side by side. And because to play volleyball, I kept my phone somewhere on a side and started playing, and I was enjoying a lot with my friend. While playing the football, as I was like a football or it can be volleyball, कोई भी आप गेम ले सकते हो यहाँ पे. So while enjoying the football, I was playing extremely happy or over cloud nine. So while playing volleyball, I was feeling extremely happy, or you could say यहाँ idiom डाल सकते हैं. So while playing volleyball, I was feeling over cloud nine, as I enjoyed the activity after a long period of time. And once you finish playing, and I was feeling tired and exhausted. Okay, I was feeling tired or I was feeling exhausted. So I was feeling exhausted, I went back to the bag where I kept my phone and my another valuables on a bench. As soon as I approached the bench, I found there was no my phone. It was missed, or it was taken up by someone else. So I rechecked my all the places. फिर के वापस गया मैं ट्रिक, and I searched for my phone. I inquired to each and every of my friend, and they also replied negatively. उसे भी पता नहीं था, तो they also replied negatively. So I searched for a while, and finally I reached to a conclusion that the phone was taken up by someone else. Taken up ये phrase है, किसी ने चुरा लिया. Someone has
taken up. The phone was taken up by someone else, and I was like, in a grief and sorrow, in a state of mind that I was feeling extremely sad. I was because the phone was much more expensive, as well as it was my hard-earned money. एंड द इंसिडेंट यहाँ पे आपको क्या है कि अभी क्यू कार्ड को क्लोजिंग तरफ ले जाना है, बहुत ज्यादा नहीं खींचना, वरना क्या कि आप लाइक खींचते जाओगे ना तो एग्जामिनर भी उठते स्टॉप, आपको अटका देगा, स्टॉप करवा देगा. सो फॉर दैट रीजन यू हैव टू रीच टू दी कंक्लूजन नाउ. आप अभी एंड पे आ जाइए, कंक्लूजन पे. Okay, the incident gave me no doubt I lost my valuable phone, which had a lot of my memories, important documents, and even I lost my money on with the phone. However, it gave me the most valuable lesson that I would never be a careful in my entire life. यहाँ पे आपको सिर्फ कंक्लूजन डाल देना छोटा सा. ओके, सो आप जब भी क्यू कार्ड प्रिपरेशन करो, पहला आपको ये ध्यान रखना है वाइल प्रैक्टिसिंग, आपको ये ध्यान रखना कि आपके जो बुलेट टॉपिक्स है, चाहे 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, कोई भी हो, कितने भी हो, नो डाउट द नंबर कैन बी वेरी, किसी में 3 है, किसी में 4 या 5 हो सकते हैं. आपको उसी पे रहना है. आप अपनी स्टोरी डेवलप कीजिए. ध्यान रखिए कि आप जो भी स्टोरी डेवलप करते हो उसके अंदर वेराइटी ऑफ वोकेबलरी आनी चाहिए, लाइक काइंड ऑफ लाइक नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल, जीरेंट्स, वो सब आ जाए. सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. ऐसा नहीं कि सारा का सारा आपका जो प्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स में दे दीजिए. मेक इट काइंड ऑफ वेरिएबल. आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्या है कि वैरायटी रखिए, वैरायटी ऑफ वोकेबलरी, वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस, वैरायटी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, पैटर्न, रेंज, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली you should add the link. Like first we did something, then we did, after that once we did something, like once I look out for my, or once I search out for my phone alone, after that I started inquiring to each and every of my friend. I inquired to each and every of my friend and they replied negatively, and finally I reached to a conclusion. ऐसे आप क्या कि 2-3 ज्यादा नहीं डालने हैं, बहुत सारे. like when we are when I request the student to add linkers, what they do, they start keeping adding much and much, like 5, 7, 10, 10, इतने सारे नहीं, just 2, 3 और 4 would be more than enough. क्योंकि आपको एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी से लाइक ओके के लाइक काइंड ऑफ सेक्शन हो जाता है. ओके, द लिंकर्स आर नथिंग बट जस्ट सेपरेटर्स, आपकी स्टोरी को अलग करेगा और कनेक्ट एज ए कनेक्टर भी एक्ट करता है. तो आपको ऐसे ही जो भी क्यू कार्ड है वो आपको प्रेजेंट करना है. आपको ये जो अभी का क्यू कार्ड था कि डिस्क्राइब समथिंग दैट यू लॉस्ट रिसेंटली, द वैल्यूएबल थिंग दैट यू लॉस्ट और द ऑब्जेक्ट यू लॉस्ट, उसका जो प्रेजेंट परफेक्ट एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ से दे रहा हूँ. A couple of months ago, I experienced a moment of sheer panic that I will never forget. It happened during a picnic with my friends at a nearby lake. It was a beautiful sunny day, and we had all brought food, games, and of course, our phones to capture the fun moments. The phone I lost was my favorite, a brand new iPhone 14 Pro that I had saved up to for almost a year to buy. It was just expensive. It also had a ton of memories, pictures from my family vacations, important notes from my studies, and even a few work-related applications I needed. Honestly, I felt like a whole life was stored on that device. The loss happened when we were playing volleyball near the lake. I had placed my phone on a bench close to our picnic spot. In all the excitement, I completely forgot about it. After the game, when I went back to grab it, the phone was gone. I panicked and started searching everywhere, asking everyone if they had seen it, but it was somewhere to be found, and I felt a mixture of frustration, anxiety, and regret. I kept blaming myself for being so careless. I even retraced my steps around the area, but deep down, I knew it might have been picked up by someone else. This experience taught me a hard lesson about responsibility. Since then, I've been extra careful with my personal belongings, especially when I'm out. I have also started using a cloud storage to back up my data so that even I lose a device, I won't lose everything on it. Looking back, I still feel upset about losing my phone, but it pushed me to be more mindful and organized. It's a lesson I will carry with me for my entire life. ओके फ्रेंड्स, तो ये आप जब भी क्यू कार्ड प्रेजेंट कर रहे हो या कभी भी बोल रहे हो, सो दैट यू हैव टू हैव योर बॉडी लैंग्वेज, योर टोन, योर एक्सप्रेशंस, योर फीलिंग एंड एवरीथिंग यू हैव टू केयरफुल. एंड उसके लिए मैं सबको लाइक यही एक टिप देता हूँ कि आप जब भी क्यू कार्ड रिप्रेजेंट करो, प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप क्या के एक मिरर टेक्निक का यूज कीजिए. द मिरर टेक्निक इज लाइक दैट, आप मिरर के सामने खड़े रह जाए और स्टार्ट स्पीकिंग विथ योर सेल्फ.
तो उसके लाइक व्हेन यू लुक एट इन योर ओन आईज यू विल फाइंड कि आपके एक्सप्रेशंस, दी फीलिंग, द मोमेंट एंड ऑल जो भी है आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो आज का जो सेशन था यहाँ पे लाइक द वीडियो आई एम गोइंग टू क्लोज डाउन ओवर हियर एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून एंड कीप वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल। एंड अभी तक अगर आपने हमारी चैनल आर इंटरनेशनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया सो आई वुड हाईली recommend you and request you kindly like, share and subscribe our channel so that all the students who are looking to or who are fighting to get a good score or high bands get obviously 7.5 or 8 or 8 plus in their first attempt of IELTS, so that they can also trace us or they can find us. So keep watching, stay tuned and thank you so much for being with us.